দৰ্শকক মই জ্যোতি বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সৰু সজাইত কিছু সময়ৰ আগতে বাগুৰুম্বা নৃত্য তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু তাৰ পাছত এই বাগুৰুম্বা নৃত্য সোৱাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা ডাঙৰ এটা মন্তব্য কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৰফৰ পৰা কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি কোৱা হৈছে আৰু লগতে অসমত থকা অবৈধ বাংলাদেশী বেদখলকাৰীক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ মন্তব্য কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে কংগ্ৰেছে অবৈধ বিদেশীক ভাল পায় ইয়াৰ পাছত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে ভূমি বিদেশীৰ পৰা মুক্ত কৰিছে আৰু তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কি মন্তব্য কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত টাইম 8ৰ দৰ্শকৰ বেলৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো টাইম 8 বিগ ব্ৰেকিং কংগ্ৰেছে অসমৰ জনতাক নিজৰ বুলি নাভাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছে বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক পছন্দ কৰে ডাঙৰ মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী এই বিদেশীসকল অসমলৈ আহি কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক হৈ যায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সৰু সজাইত মন্তব্য কৰিছে সেইবাবেই কংগ্ৰেছৰ শাসনত অসমত বিদেশী প্ৰৱেশ কৰি থাকিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে অসমৰ লাখ লাখ ভূমি বেদখল কৰা হ'ল কংগ্ৰেছৰ আমূলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে বিদেশীসকলক সহায় কৰি আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এক্সক্লুসিভ মন্তব্য কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত দেখুৱাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ লাখ লাখ বিঘা ভূমি বিদেশী মুক্ত কৰা হৈছে বেদখল মুক্ত কৰা হৈছে ইয়াত মই আনন্দিত হৈছো ইয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশংসা কৰি কৈছে যে চৰকাৰে যি পদক্ষেপ কৰিছে যি পদক্ষেপ লৈছে বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে বেদখল মুক্ত কৰাক লৈ তাক লৈ মই আনন্দিত হৈছো কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি কৈছে যে কংগ্ৰেছে অসমৰ জনতাক নিজৰ বুলি নাভাবে সৰু সজাই পৰা কংগ্ৰেছক সুৰধাৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছে বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক পছন্দ কৰে ইয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য এই বিদেশীসকল অসমলৈ আহি কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক হৈ যায় আন এক বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সেইবাবেই কংগ্ৰেছৰ শাসনত অসমত বিদেশী প্ৰৱেশ কৰি থাকিল অসমৰ লাখ লাখ বিঘা ভূমি এই সকল বিদেশীয়ে বেদখল কৰিলে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছে বিদেশীসকলক সহায় কৰি আহিছিল ইয়াৰ অৰ্থ ৰাজ্যত যি বেদখল মুক্ত কৰাৰ অভিযান সেই অভিযান ধাৰাবাহিকভাৱে চলি যাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ লাখ লাখ বিঘা ভূমি বেদখল মুক্ত কৰা হৈছে ইয়াত মই আনন্দিত হৈছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৰফৰ পৰা এই মন্তব্য কৰা হৈছে আজি বাগুৰুম্বা নৃত্য তেওঁ কিছু সময় আগতে চালে য'ত 10,000তকৈ অধিক যিসকল তাত লোক আছিলে তেওঁলোকে এই নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতে সেই অনুষ্ঠানত ভাষণ দিয়াৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে আমাৰ লগত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য এক্সক্লুসিভ মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো মন্তব্য শুনক मुझे खुशी है कि आज हेमंत जी की सरकार असम के लोगों के हक की लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करवा रही है कांग्रेस असम के लोगों को अपना नहीं मानती है कांग्रेस के लोगों को विदेशी घुसपैठिए ज्यादा पसंद है क्योंकि वो यहां आकर कांग्रेस का कट्टर वोट बैंक बन जाते हैं इसलिए कांग्रेस के राज में विदेशी घुसपैठिए आते रहे असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और कांग्रेस सरकार उनकी मदद करती रही मुझे खुशी है कि आज हेमंत जी की सरकार असम के लोगों के हक की लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करवा रही है मुझे खुशी है कि आज हेमंत जी की सरकार असम के लोगों के हक की लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करवा रही है कांग्रेस असम के लोगों को अपना नहीं मानती है कांग्रेस के लोगों को विदेशी घुसपैठिए ज्यादा पसंद है क्योंकि वो यहां आकर कांग्रेस का कट्टर वोट बैंक बन जाते हैं
इसलिए कांग्रेस के राज में विदेशी घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और कांग्रेस सरकार उनकी मदद करती रही। मुझे खुशी है कि आज हेमंता जी की सरकार असम के लोगों के हक की लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करवा रही है। मुझे खुशी है कि आज हेमंता जी की सरकार असम के लोगों के हक की लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करवा रही है। कांग्रेस असम के लोगों को अपना नहीं मानती है। कांग्रेस के लोगों को विदेशी घुसपैठिए ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो यहां आकर कांग्रेस का कट्टर वोट बैंक बन जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के राज में विदेशी घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और कांग्रेस सरकार उनकी मदद करती रही। मुझे खुशी है कि आज हेमंता जी की सरकार असम के लोगों के हक की लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करवा रही है। मुझे खुशी है कि आज हेमंता जी की सरकार असम के लोगों के हक की लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करवा रही है। कांग्रेस असम के लोगों को अपना नहीं मानती है। कांग्रेस के लोगों को विदेशी घुसपैठिए ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो यहां आकर कांग्रेस का कट्टर वोट बैंक बन जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के राज में विदेशी घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और कांग्रेस सरकार उनकी मदद करती रही। मुझे खुशी है कि आज हेमंता जी की सरकार असम के लोगों के हक की लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करवा रही है। मुझे खुशी है कि आज हेमंता जी की सरकार असम के लोगों के हक की लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करवा रही है। कांग्रेस असम के लोगों को अपना नहीं मानती है। कांग्रेस के लोगों को विदेशी घुसपैठिए ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो यहां आकर कांग्रेस का कट्टर वोट बैंक बन जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के राज में विदेशी घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और कांग्रेस सरकार उनकी मदद करती रही। मुझे खुशी है कि आज हेमंता जी की सरकार असम के लोगों के हक की लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करवा रही।